Good morning, my dear students. I welcome you all in this online class. Dear students, as we have done present and past tense, today we will do future tense. So, what is our topic today? The future tense. It is our chapter 13. Clear? So, dear kids, in present tense, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था, in that tense we use first form of verb. Clear? For example, he plays. Clear? जो आपका past tense था, in that tense क्या था उसमें? verb की second form. For example, he played. And what is simple future? जो future tense है उसमें क्या होगा आपका होगा उसमें will, shall plus verb की first form. For example, I will write a letter. Clear? अब डियर किड्स यहाँ पे विल और सेल है, सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज. जो आपका आई और वी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हो और विल का भी. क्लियर? आई और वी के साथ आप सेल और विल का यूज कर सकते हो. और जो आपका सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे. क्लियर? आप उसके साथ किसका यूज करोगे? विल का. क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मेशन फॉर सिंपल सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस? सिंपल सेंटेंस. सो व्हाट इज द फॉर्मेशन फॉर दैट? सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट प्लस विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही विल प्ले फुटबॉल. ही विल प्ले फुटबॉल. या आई shall play football. स्टार्टिंग में क्या है आपका? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, सेल. तो ही के साथ किसका यूज करोगे? विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल. यहाँ पे आई के साथ किसका यूज करोगे? सेल का. बट आई के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हो. I shall या I will play football. Now we have done simple sentence formation. Now we will do negative sentence formation. So what is formation for negative sentence? In starting subject, then will, shall, then not और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? एग्जाम्पल, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल. वी विल नॉट प्ले फुटबॉल. क्लियर? या ही विल नॉट प्ले फुटबॉल. स्टार्टिंग में क्या है आपका? सब्जेक्ट. वी क्या है आपका? सब्जेक्ट. अब विल, सेल. सो डियर किड्स, वी के साथ आप किसका यूज कर सकते हो? सेल का भी यूज कर सकते हो और
वी के साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हो और वी के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हो, बोथ आर राइट। वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, क्लियर। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन विल सेल प्लस नॉट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ए ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सब्जेक्ट विल सेल देन नॉट देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ए ऑब्जेक्ट, क्लियर। नाउ वी विल डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, interrogative sentence. What is formation for interrogative sentence? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आप क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस बनाओगे उसके लिए क्या आएगा, स्टार्टिंग में विल या सेल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्लियर। जैसे ये आपका वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, लेट मेक इट इंट्रोगेटिव, विल वी प्ले फुटबॉल, will we play football, and in last question mark, how you will make this interrogative, will he play football, and in last question mark, clear। So dear kids, what is the formation for future tense? जो सिंपल फ्यूचर में फॉर्मेशन क्या होगी, आपको किस चीज पे फोकस करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ए ऑब्जेक्ट, क्लियर। एंड यू कैन मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद दिस फॉर्मेशन। सो dear kids, I hope you have clearly understood about future tense, and if you have any kind of query you can write in a comment box. Now we will do book exercise. Now let's do exercise. Complete the sentences using the verbs given in the brackets in simple future tense. आपको क्या करना है, you have to fill the blanks with the simple future tense. First is, it is very hot. I think I dash an ice cream. So what is in bracket? Eat. तो आप क्या करोगे, I shall eat या will eat. आप will भी लगा सकते हो I के साथ और shall भी. It is very hot. I think I will eat an ice cream. Second is, mother dash a sandwich for me as I am hungry. What is in bracket? Make. So mother will make. Mother will make a sandwich for me as I am hungry. Now come on third. Karan dash to the market to buy some fruits. What is in bracket? Go. So Karan will go to the market to buy some fruits. Fourth is, Rohan is busy today. Rohan is busy today. He dash to play tennis tomorrow. So what is in bracket? Come. So he will come to play tennis tomorrow. Or fifth is, Neha dash me in decorating the house. Neha will help. Neha will help me in decorating the house. Sixth is, Father dash these medicines by tomorrow. What is in bracket? Need. So father will need these medicines by tomorrow. Seventh is, I think Hari dash this contest. So what is in bracket? Win. I think Hari will win.
Hari will win. 8th is my brother does his best to make our parents proud. What is in bracket? Do. My brother will do his best. My brother will do his best to make our parents proud. Do wait for me. I dash by 5 o'clock in the evening. What is in bracket? Reach. Do wait for me. I will reach by 5 o'clock in the evening. 10th is I do not feel like doing my homework. I don't feel like doing my homework. I dash it tomorrow. What is in bracket? Complete. So, I don't feel like doing my homework. I will complete it tomorrow. 11th is we dash for Krishan till 6 o'clock. What is in bracket? Wait. We will wait for Krishan till 6 o'clock. 12th is the team dash have its last practice day. The team will have its last practice day. The team will have its last practice today. It is not day, it is today. 13th is Australia and India dash play the final match tomorrow. Australia and India dash in the final match tomorrow. So what is in bracket? Play. Will play. The trees dash shed. What is in bracket? Shed their leaves in autumn. The trees will shed. 15th is Rahul dash the race. Rahul will win the race. Clear? So what is in first? What is in bracket? Eat, will eat. Make, will make. In third, go, will go. Come, will come. Help, will help. Need, will need. Win, will win. Do, will do. Reach, will reach. Complete, will complete. Wait, will wait. Have, will have. Play, will play. Set, will set. Win, will win. So dear kids, it was your exercise, and if you have any query regarding this chapter, you can write in comment box and you will do this exercise.